हेलो स्टूडेंट। सो आज हम देखेंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन इज़ अ कंडीशन व्हेन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर देन 140 mmHg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर देन 19 mmHg। मतलब हाइपरटेंशन जो होता है उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 19 mmHg होता है। अब इस क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर फॉर एडल्ट, इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। जैसे नॉर्मल है तो उसमें 120 सिस्टोलिक होगा और डायस्टोलिक 80 लेस देन। प्री हाइपरटेंशन में 120 से 129 एंड लेस देन 80। स्टेज 1 हाइपरटेंशन 130 टू 139 एंड जो डायस्टोलिक होगा वो 80 टू 89। स्टेज सेकेंड हाइपरटेंशन 140 और हायर एंड डायस्टोलिक जो होगा वो 90 और हायर। हाइपरटेंशन क्राइसिस जो होगा उसमें हायर देन 180 एंड हायर देन 120 डायस्टोलिक होगा। अब सब टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। Isolated systolic hypertension. Isolated systolic hypertension is a condition when systolic blood pressure is greater than 140 mmHg and diastolic blood pressure is less than 19 mmHg. This type of hypertension is mostly seen in younger adults. Pseudo hypertension. It is also called as false hypertension. This condition of hypertension occurs with arteriosclerosis. This type is seen when an artery feels rigid or when few cardiac signs are found related to pressure. अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे? रिपीटेड स्ट्रेस, क्रोनिक एल्कोहलिज्म, डायबिटीज़ मेलाइटस, क्रोनिक किडनी डिजीजेस, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स, एलिवेशन ऑफ सीरम लिपिड लेवल, हार्ट डिजीज़। अब एज ओल्डर देन 55 ईयर्स, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, फिजिकल मोबिलिटी और इनएक्टिविटी, लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ओबेसिटी, एक्सेसिव इंटेक ऑफ सोडियम इन डाइट। एटियोलॉजी क्या हो सकता है? एटियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ हाइपरटेंशन एज बिलो। जैसा हाइपरटेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग एटियोलॉजी यहाँ पे दी हुई है। प्राइमरी हाइपरटेंशन, दिस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन इज आल्सो कॉल्ड एज essential or idiopathic hypertension because the exact cause of this hypertension is unknown. It may be associated with following factors: obesity, excessive alcoholism, excessive sodium intake, diabetes mellitus, hormonal imbalance. सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होगा? दिस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन इज एसोसिएटेड विथ अदर मेडिकल कंडीशन ऑफ मेडिसन्स। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में अकर ड्यू टू प्रेगनेंसी और प्री एक्लेम्सिया, रीनल डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, सिंपैथेटिक स्टिमुलेंट्स, congenital narrowing of aorta, sleep apnea, hyperparathyroidism, adrenal gland disorders, and cirrhosis. Clinical manifestations. Hypertension is also called as the silent killer disease because it shows no symptoms until it reaches a high level. When hypertension is symptomatic, it is manifested by following signs and symptoms: palpitations, dyspnea, visual problems, dizziness and fatigue, angina, reduced activity tolerance, headache, nosebleeds। ये साइन एंड सिम्टम्स हैं हाइपरटेंशन के। अब डायग्नोस्टिक इवेलुएशन हम देखेंगे। डायग्नोस्टिक इवेलुएशन में सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, पेशेंट का पूरा हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, BUN एंड क्रिएटिनिन, इकोकार्डियोग्राफी, सीरम लिपिड स्टडीज़, रूटीन यूरिन एनालिसिस, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। मैनेजमेंट गोल्स: टू नॉर्मलाइज BP, to prevent complication and death, to relieve symptoms. Medical management: if the patient is pre-hypertensive or having
uncomplicated hypertension. Only beta blockers and diuretics are prescribed. No other therapies are indicated for this type of hypertension. If the patient having complicated or severe hypertension, then following drug therapy is prescribed. Vasodilators, for example, hydralazine or minoxidil. Calcium channel blockers, for example, isradipine, amlodipine. Alpha 1 blockers, for example, terazosin. Beta blockers, metoprolol. Combined alpha and beta blockers, carvedilol. Angiotensin converting enzymes, ramipril, captopril, enolpril. Diuretics, thiazide diuretics, chlorothiazide. Loop diuretics में furosemide. Aldosterone receptors blockers, spironolactone. Adrenergic inhibitors, central acting adrenergic antagonist, methyl dopa. Nursing management, nursing diagnosis, acute pain related to actual tissue damage and possible evidence by throbbing pain in head, dizziness and blurred vision, neck stiffness, changing pattern of appetite. Nursing intervention में determine the location of pain, assess the characteristics of pain such as duration, intensity and frequency. Advise the patient for pain relieving techniques such as rubbing of back and neck. Apply cold application on forehead. Provide rest during episode of pain. Provide comfortable position. Record the patient reaction towards pain. Administer drug as prescribed. इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस एक्यूट पेन रिलेटेड टू एक्चुअल टिश्यू डैमेज एंड पॉसिबल एविडेंस बाय नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस हम बना सकते हैं रिस्क फॉर डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू इनएडिक्वेट ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन चेक द वाइटल साइन मॉनिटर एंड रिकॉर्ड ब्लड प्रेशर इन्वेस्टिगेट ब्लड फॉर कार्डियक मार्कर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड और decrease sodium rich diet, close observation of the patient which include color of skin, auscultate, record, breathe, sound, administer medication as prescribed. Nursing diagnostic third, imbalanced nutrition more than body requirement related to excessive intake due to metabolic need. Nursing intervention assess the nutritional pattern by asking questions from the patient about diet and dietary product used by him. Check the patient body weight. Assess the knowledge of the patient regarding relationship between obesity and blood pressure. Instruct the patient to reduce calories. Help the patient to prepare diet menu plan. Advise the patient to limit intake of sugar, salt and fatty diet. Advise the patient for exercise to lose body weight. Nursing diagnosis for knowledge deficit related to deficient information regarding hypertension. Nursing intervention assess the level of knowledge of the patient regarding hypertension. Explain the hypertension of the patient such as etiology, features, nature and treatment. Describe the prevention measure of hypertension. Discuss with the patient about lifestyle modification to reduce chances of hypertension. Patient education. Instruct the patient to avoid alcohol consumption because alcohol drinking is a major risk for the risk factor of the hypertension. Educate the patient about dietary modification in which reduction of sodium in diet and not adding salt in preparation of food. Instruct the patient to reduce weight because it is also a greater risk factor in hypertension, so advise for regular exercise. Advise the patient to avoid use of tobacco product because use of tobacco is an important factor of cardiac disease. Advise to avoid stress and anxiety because these psychological factors are contributing factors for hypertension. Educate about regular follow-up treatment. Instruct the patient to exercise and do morning walk.
ये प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन दिए हुए हैं कुछ। वेट लॉस, रिड्यूस सोडियम इनटेक, इंक्रीज पोटेशियम इनटेक, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? हार्ट फेलियर, सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, रेटिनल हेमरेज, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, रीनल फेलियर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हाइपरटेंशन is a